ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 17 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें જ્ઞાન કા તીસરા નેત્ર દેને આए हैं. ગઈકાલે બી બાબાએ વાત કરીને ત્રીજું નેત્ર કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તો પરમાત્માને અને પરમાત્મા દ્વારા રચેલી આ સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અંતને જાણીએ છીએ, જ્ઞાનને સમજીએ છીએ, તો આપણને જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર મળે છે. તો બાબા આવી જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર આપે છે, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है. અને એ જ્ઞાનના ત્રીજા નેત્ર દ્વારા આપણી આત્માની જ્યોતિ જાગૃત થઈ જાય છે, સદા જાગતી જ્યોત બને છે. प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? લોકો ભગવાન માટે કહેતા હોય છે ને કે ભગવાન તો કરણ કરાવનહાર છે, તો ભગવાન કરણ કરાવનહાર ક્यों? એક શું કરે છે ને શું કરાવે છે, જેના કારણે આપણે એમને કરણ કરાવનહાર કહીએ છીએ. તો બાપ कहते, मैं तुम बच्चों को रोज मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ. बाबा रोज कौन सा कार्य करते हैं? આપણને મુરલી સંભળાવવાનું, જ્ઞાન આપવાનું. मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ. बाबा मुरली संभળાવે છે, મંત્ર આપે છે, મનમના ભવ મધ્યાજી ભવ, અને આપણને સત્યુગી દુનિયાના લાયક બનાવે છે, અને પછી આપણા દ્વારા સત્યુગી દુનિયા સ્વર્ગનું ઉદ્ઘાટન કરાવે છે. तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो. કારણ કે પરમાત્માએ આપણને સંદેશ આપ્યો, પછી આપણે શું બનવાનું છે? પૈગંબર, મેસેન્જર બની સર્વ આત્માઓને સંદેશ આપવાનો છે. मैं तुम बच्चों का डायरेक्शन देता हूँ, यह मेरी कृपा व आशीर्वाद है. બાબા આપણને જ્ઞાન દ્વારા માર્ગદર્શન કરે છે, જ્ઞાન આપીને આપણને સમજાવે છે અને આપણને ઊંચા બનાવે છે. તો બાબા કહે છે એ જ્ઞાન આપવું એ જ મારી કૃપા અર્થાત ડાયરેક્શન છે. ગીત. कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे. તો કોણ આવ્યું આજે સવારે સવારે? મનના દ્વારે. બાબા આવે ને બધાના મનના દ્વારે. ओम शांति. बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? આપણને સવારે સવારે ઉઠાડવા કોણ આવ્યો? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया. કે બાબા આવે છે, તો બાબા આવીને સવારે અમૃત વેળાએ આપણી સાથે રૂહ રિહાન કરે છે, વાતો કરે છે, જ્ઞાનના નવા નવા બિંદુઓથી આપણને જાગૃત કરે છે. તો આપણું જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર ખુલી જાય છે. તો જ્ઞાન સાગર परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है. कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है. बाबा શું છે? જ્યોતિ જગાને વાલા, માના આપણી આત્માની જ્યોતને જાગૃત કરે છે, જ્ઞાન રૂપી ધ્રીત નાખી અને આત્માની જ્યોતિને જાગતી જ્યોત બનાવે છે. परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते. ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है, ज्योति है. બ્રહ્મ સમાજી લોકો છે એ શું માને છે પરમાત્મા માટે? એ ક્ષમા મના અગ્નિ છે, જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. તો બાબા કહે છે મંદિર में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं. इसीलिए वहाँ मंदिर में દીવા જગાતે ही रहते हैं. કારણ કે ભગવાનને શું માને છે? જ્યોતિ સ્વરૂપ માને છે. તો પારસી ધર્મની અંદર બી એમના જે મંદિર હોય છે, અગિયારી હોય છે, તો ત્યાં અગ્નિનો પુંજ જ હોય છે ને. કારણ કે એ લોકો માને છે કે ભગવાન જ્યોત સ્વરૂપ છે, અગ્નિ સ્વરૂપ છે.
अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह बात तो ही न्यारी है। बाबा कोई માચિસથી આપણી આત્માની જ્યોતને નથી જગાડતા, જ્ઞાન દ્વારા આપણી આત્માની જ્યોતને જગાડે છે। માના જગાવું માના પ્રજ્વલિત કરવું। તો બાબા જે જ્ઞાન આપે છે તો સૌથી ન્યારું છે અને એ ન્યારા જ્ઞાન દ્વારા આપણી આત્માની જ્યોતિ સદૈવને પ્રજ્વલિત બને છે। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है, कारण के परमात्मानी जे गत मत છે, પરમાત્માની જે વાતો છે, જે જ્ઞાન છે એ દુનિયાના કોઈ વ્યક્તિ પાસે ના હોઈ શકે, એટલા માટે કહ્યું ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा ज्ञान योग केम શીખવાડે છે? કારણ કે હરેક આત્માઓને સદગતિ આપવા આવ્યા છે બાબા, તો રાજ જ્ઞાન योग શીખવાડે છે। સિખલાને વાલા તો જરૂર ચાહીએ ના, કારણ કે સદગતિ હરેકને આપવાની હોય, મુક્તિ જીવન મુક્તિનો વારસો આપવો હોય તો શીખવાડવા વાળા તો જોઈએ કે કઈ રીતે મળશે મુક્તિ જીવન મુક્તિનો વારસો। शरीर तो नहीं सिखाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रविष्टा है। कारण के परमात्मा आवीने आपणे ज्ञान योग શીખવાડે છે, કોઈ શરીરધારી શીખવાડી શકે નહીં, કારણ કે આત્મા જ બધું કરે છે અને પરમાત્મા આવીને જ્ઞાન યોગ બી શરીરને નથી શીખવાડતા, આત્માને શીખવાડે છે। આત્માની અંદર જ સારા ખોટા સંસ્કાર ભરાય છે। તો અત્યારે આ સમયે રાવણની પ્રવેશતા હરેક મનુષ્યની અંદર હોવાના કારણે હરેકની અંદર 5 વિકારોના આધીન સંસ્કાર છે। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं, देवताओं में 5 विकार होता नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे। भारत में देवी स्वराज्य हतुं तो आवा गलत संस्कार न हता, अने अत्यारे रावणનું राज्य છે, રાવણનું સ્વરાજ્ય છે, તો હરેકની અંદર વિકારોના આધીન સંસ્કાર છે। जहाँ देवी स्वराज्य था वहाँ सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, જોવા જઈએ તો દેવી દેવતાઓના ચરિત્રોને જોઈએ તો દેવી દેવતાઓની અંદર કેટલા સરસ સંસ્કાર હતા। जो अभी भी तुम धारण कर रहे हो, અને એ સારા સંસ્કાર જોઈને આજે તો આપણે એમની મહિમા કરીએ છીએ, દેવી દેવતાઓની એમના ચરિત્રોનું ગાયન પૂજન થાય છે, એટલા ઊંચા સંસ્કાર હતા। बाप ही आकर सेकंड में सर्व की सदगति करते हैं, बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं। एक परमात्मा छे કે જે આવીને સર્વની સદગતિ ગતિ સદગતિ કરે છે, બાકી દુનિયાની અંદર જે ગુરુ ગોસાઈ કે જે ધર્માત્માઓ છે એ કોઈની ગતિ સદગતિ કરી શકતા નથી, કારણ કે એ લોકો તો ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા। जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। गई काले भी बाबाए कह્યું सदगुरु कोण કે જે ગતિ સદગતિ કરે એને સદગુરુ કહેવાય। ચાહે ભલે ધર્માત્માઓ છે પણ ધર્માત્માઓને બી ગુરુ ન કહેવાય, કારણ કે ગુરુનું કાર્ય શું હોય? પોતાની સાથે લઈ જવાનું, પણ ધર્માત્માઓની તો પાછળ પાછળ ઉપરથી બધા આવે છે, એમની પાછળ પાછળ કોઈ ઉપર જતું નથી। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसीलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वा दरवाजा खोलो। भगवान ने केम बोलाव्या कि हे प्रभु आओ, पतित दुनियानो विनाश करी पावन दुनियानो उद्घाटन करो, पावन दुनियानो दरवाजो खोलो।
तो बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। આપણે ભગવાનને બોલાવે કે હે ભગવાન આવો, પાવન દુનિયાની રચના કરો, પતિત દુનિયાનો વિનાશ કરો અને પાવન દુનિયાના ગેટ ખોલો કે અમે પાવન દુનિયામાં જઈ શકીએ। તો બાબા કહે છે પાવન દુનિયાના ગેટ તો હું તમારા દ્વારા જ ખોલાવીશ। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। શું કહ્યું બાબાએ? આ મહિમા અત્યારની માતાઓની નથી, કારણ કે અત્યારે કોઈ શ્રેષ્ઠાચારી છે નથી। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं। श्रेष्ठाचारी कोने कहेवाय? जे योग बलथी पैदा थाय छे। अत्यारे तो कળિયુગી दुनियामां कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। ભારતની અંદર જ્યારે દેવી દેવતાઓ હતા ત્યારે ભારત ભૂમિ શ્રેષ્ઠાચારી હતી, કારણ કે દેવી દેવતાઓની દુનિયામાં દેવી દેવતાઓનો જન્મ યોગ બલથી બતાવ્યો છે। તો એટલા માટે બાબાએ કહ્યું જેમનો જન્મ યોગ બલથી છે એ શ્રેષ્ઠાચારી કહેવાય। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि अभी रावण राज्य है। एक बाजू જોઈએ तो गांधी बापू भी कहता था कि राम राज्यની સ્થાપના થાય, રામ રાજ્યની સ્થાપના થાય। તો એના ઉપરથી ખબર પડે કે અત્યારે રાવણ રાજ્ય છે। બીજું આજે કોઈ મૃત્યુ પામે તો લોકો શું કહે? સ્વર્ગવાસી થયા। તો એના ઉપરથી બી સમજી જઈએ કે અત્યારે નર્કની દુનિયા છે। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए। राम राज्य की स्थापना करवा माटे कौन જોઈએ? बेहदना बापूजी। कोई गांधी बापू द्वारा राम राज्य की स्थापना ना थाय। गांधी बापूए घणी मेहनत करी पण भारतमांथी अंग्रेजोने काढ्या, पण भारतना जे लोको छे एमने राम जेवा तो ना बनावी शक्या। तो राम राज्यની સ્થાપના કઈ રીતે થશે? તો राम राज्य की स्थापना करवा माटे बेहदना बापूजी माना शिव बाबा જોઈએ, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। અત્યારે કળિયુગમાં હરેક આત્માઓ અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં સૂતેલી હતી। બાબાએ આવીને આપણી આત્માઓ પર જ્ઞાનનો પ્રકાશ નાખ્યો અને આપણે બી અજ્ઞાનતાના અંધકારમાંથી જાગી ગયા છે। ભક્તિ की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। હવે ભક્તિની રાત પૂરી થઈ, ज्ञान रूपी दिवस की शुरुआत थई। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा आव्या छे संगम पर, तो संगम पर आवीने शुं करे छे? बाबा बाळकोने दिव्य दृष्टि अने दिव्य बुद्धि आपे छे। जे दिवसे आपणे बाबाना बनीए छे ए दिवसे बाबा पासेथी बे वरदान मळे छे, एक दिव्य दृष्टिनुं अने बीजुं दिव्य बुद्धिनुं। जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह सब बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। कंईक हवे बुद्धिमां बेसी गयुं। बाबाए दिव्य बुद्धि आपी, दिव्य दृष्टि आपी, तो आखा विश्वने आपणे जाणी गया। विश्वना आदि मध्य अंतनुं ज्ञान मळी गयुं। तो बाबा कहे छे हवे तो जाणी गया छो, अभी तुम कितना जाग गए हो।
सारी दुनिया सोई हुई है, आखी दुनिया सुतेली छे ने आपणे ज्ञान द्वारा जागी गया छे। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। आखी दुनिया क्या सुतेली छे? कुंभकर्णनी अज्ञानतानी निंद्रामां सुतेली छे। अने आपणे तो बाबाए केटલું ઊંચું જ્ઞાન આપ્યું। વિશ્વના આદि મધ્ય અંત, પૃથ્વીના આદि મધ્ય અંતનું તો જ્ઞાન આપ્યું સૃષ્ટિનું, પરંતુ આ મૂળ વતન, પરમધામ, સૂક્ષ્મ વતન અને આ સ્થૂલ વતન સૃષ્ટિનું બી જ્ઞાન આપ્યું। यह किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं जानते कि आकर के, यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। भगवान ने बोलावे छे कि हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, परंतु भगवान ने एम नहीं कहता कि आवीने सृष्टिना आदि मध्य अंतનું ज्ञान समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्रवर्ती राजा कई रीते बनीए छे? सृष्टि चक्रना राजने समझवाथी चक्रवर्ती राजा बनाए छे। याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। लड़ाईनो समय अत्यारे छे, कोई भूतकाळमां कौरवों के पांडवों कोई हता नहीं कि जेमनुं युद्ध थयुं हतुं। तो बाबा कहे छे अत्यारे विनाश सामे ऊभो छे, लड़ाई होनी है। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा। अपनी बाजू कौन से? अपनी सेना में अपना सारथी कौन से? साक्षात पारलौकिक परम पिता परमात्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। कृष्णनी आत्मा 84 जन्म पूरा भोगव्या हवे फरीथी बाबा पासेथी वारसो मेळवी रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है। क्या गाया हुआ है? भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। भगवान वाच शू छे? भगवाने शू कह्युं? गृहस्थ व्यवहार में रहवा छतां आ एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नोंध है। जे थवानुं हतुं ए तो थई गयुं। हवे पोताना जीवनने ऊंचुं बनावो। सृष्टि तो सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। नाटकनी भावी छे। नाटकनी अंदर नोंधायेलुं छे कि सृष्टिने सतो प्रधान बनवानुं छे अने आ पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनियानो विनाश थवानो छे। तो ए तो थवानुं छे। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब ही मैं आता हूँ। बाबा क्यारे आवे छे? कळियुग रूपी रात्रि पूरी थाय छे, सत्युग रूपी दिवसनी शरूआत थवानी होय छे, त्यारे बाबा आवे छे। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है।
શિવરાત્રિની પહેલાં રજાઓ પડતી હતી, હવે તો બાબા કહે છે ગવર્મેન્ટને તો રજા भी બંધ कर दी, नहीं तो कम से कम 1 मास હોલિડે ચલनी चाहिए। શિવરાત્રિ નિમિત્તે બાબાએ કેટલા દિવસની રજાઓ કીધી? 1 મહિનાની રજાઓ જોઈએ। कोई को भी पता नहीं, शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। बाबा तो સર્વ આત્માઓની સદગતિ કરવાવાળા છે, દુઃખ હરતા સુખ કરતા છે। તો બાબાએ શું કહ્યું? શિવ બાબાની જન્મ જયંતિ શિવરાત્રિ તો ધૂમધામથી 1 મહિના સુધી સર્વ ધર્મની આત્માઓએ મનાવવી જોઈએ। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति करते हैं, એટલા માટે ભારતવાસીઓએ તો ખાસ શિવરાત્રિ મનાવવી જોઈએ। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपन्न संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। કારણ કે જ્યારે સત્યુગી દુનિયા હોય છે ત્યાં બીજા કોઈ ધર્મ નહીં હોતા, ત્યારે વિશ્વના માલિક કોણ હોય છે? દેવતાઓ હોય છે, કોઈ પાર્ટીશન બી નથી હોતા। અટલ અખંડ સુખ શાંતિ સંપત્તિથી ભરપૂર રાજ્ય હોય છે, જે બાબા અત્યારે આપણને પ્રાપ્ત કરાવી રહ્યા છે। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा, वहाँ अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि दोनों का आपस में क्या संबंध है। बोलो, બાબાએ આપણને સમજૂતી આપી છે ને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ, તો વિષ્ણુ અને બ્રહ્માનો આપસમાં કયો સંબંધ છે? તો કહેવાય છે કે વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળ નીકળ્યું અને જેમાં બ્રહ્મા બતાવ્યા, તો બ્રહ્મા સો વિષ્ણુ, વિષ્ણુ સો બ્રહ્મા। સૃષ્ટિની અંદર પહેલો જન્મ વિષ્ણુના સ્વરૂપે થાય છે અને એ જ આત્માનો અંતિમ જન્મ એ બ્રહ્મા સ્વરૂપે હોય છે। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यह कैसे वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। दुनियाની અંદર બાબા કહે છે જે બી ચિત્રો બનેલા છે તમે જુઓ છો, परंतु એની અંદર कोई सत्य છે नहीं। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। शिवलिंग કેટલું મોટું બનાવે છે, પરંતુ રિયલમાં તો શિવ એટલા મોટા છે નહીં, તો બાબા કહે છે એ બી અયથાર્થ છે। भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पति थे, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है।
यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा જરૂર यहाँ चाहिए। તો બાબાએ કયા અર્થમાં કહ્યું કે બ્રહ્મા દ્વારા સ્થાપના નહીં? કારણ કે સ્થાપનાનું કાર્ય તો શિવ બાબાનું છે, પરંતુ બાબા બ્રહ્માને નિમિત્ત બનાવીને જ્ઞાન આપે છે। તો બ્રહ્મા તો એક માધ્યમ છે, બાકી સ્વર્ગીય દુનિયાની સ્થાપના કોણ કરે છે? શિવ બાબા। फिर એ જ સતયુગમાં જાય છે, નારાયણ બને છે। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर અહીંયા જોઈએ। चित्र फिर वहाँ के दे दिए हैं, जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए। कौन से अलंकार? शंख, चक्र, गदा, कमल अलंकार कोना છે? બાબા કહે છે બ્રાહ્મણોના છે, પરંતુ આપી દીધા છે વિષ્ણુને। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार से। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। बाबा કહે છે અત્યારે આ જ્ઞાન કેમ સાંભળી રહ્યા છે? તો લક્ષ્મી અથવા નારાયણને વરવા માટે, કે લક્ષ્મી નારાયણના રાજ્યમાં જવું હોય, એમની સાથે જવું હોય, તો એમના જેવા લાયક તો બનવું પડશે। नारद के लिए भी दिखाते हैं ना, सभा में आकर कहाँ हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। જ્યારે લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા તો પ્રશ્ન થયો કે લક્ષ્મીજી જાય કોની સાથે? તો એ સમયે નારદજી આગળ આવ્યા કે લક્ષ્મીજીને હું વરીશ। તો એ સમયે જે દેવતાઓ હતા, અસુરો હતા, બધા નારદજી ઉપર હસી ઉડાડવા લાગ્યા કે પહેલાં લક્ષ્મીનો વરવાને લાયક તો બનો। તો બાબા આપણને એના માટે લાયક બનાવી રહ્યા છે। બાકી વહ તો સબ હે ભક્તિ માર્ગ की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? भक्ति तो द्वापर में हो, सतयुग में तो कोई भक्त होता नहीं, भक्ति द्वापर थी शुरू थई अने सतयुग में लक्ष्मीजी छे। तो सतयुग में पछी नारद क्यांथी आव्या? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। बाबा कल्याणकारी छे अने आपणे भी कल्याणकारी बनावे छे। तो अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाए? बाबा કહે છે વિચાર સાગર મંથન કરો કે બાબા કલ્યાણકારી છે, આવીને આપણને કલ્યાણકારી બનાવી રહ્યા છે, તો આપણે બી બીજાનું કલ્યાણ કઈ રીતે કરીએ, બીજાને જ્ઞાન કઈ રીતે આપીએ? तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता और कहाँ यह मनुष्य? इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। परमात्मा आवीने आपने ज्ञान आपी रह्या छे, डायरेक्ट आपणे परमात्मानुं ज्ञान लई रह्या छे, तो खुशी रहे छे। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। भगवान कब आया, कब आके गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ नहीं जानते। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख देते हैं, कोई की बुद्धि में आता नहीं है।
अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। બાબા જ્ઞાન આપે છે અને હવે બ્રાહ્મણોનું જાળ વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हाँ, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, कैसे वर्णों में चक्र लगाते हैं अब जानते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचे। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। આપણે કોણ છીએ? ભારતના ગુપ્ત રૂહાની સોશિયલ વર્કર, સામાજિક કાર્યકરો। અને એને સામાજિક કાર્ય કયું કરીએ છીએ? આત્માઓનું કલ્યાણ કરવાનું। તો परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं और वह जिस्मानी सेवा करते हैं। દુનિયાની અંદર સામાજિક કાર્યકરો છે ને એ લોકોને શરીરનું પોષણ આપવા માટેની સેવાઓ કરે છે અને આપણે આત્માનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवादार। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है ना। तो बाबा करता भी है तो करावनहार भी है। तुमको भी ऐसे सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। बाबा मुरली चलावे छे પછી આપણને શીખવાડે બી છે કે તમે બી આ રીતે મુરલી ચલાવો। महामंत्र देते हैं मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, बाबाए कर्म करता सिखवाड्યું तो बाबा करावनहार भी बनी गया। फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। बाबा करे बी छे પછી શીખવાડે બી છે અને પછી કહે છે કે તમે બીજાને બી શીખવાડો, માટે કરણ કરાવનહાર કહ્યું। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। આપણે બી બીજાને કઈ શિક્ષા આપે છે કે પરમાત્માને યાદ કરો અને પરમાત્મા દ્વારા જે વારસો પ્રાપ્ત થાય છે એને યાદ કરો। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे फिर क्या होगा। बाबा के आ संदेश हरेकने आपવાનો છે કે પરમાત્માને યાદ કરો, વર્ષાને યાદ કરો, પણ એવું નહીં કે સંદેશ જ આપવાનો છે। પહેલાં તો પ્રેક્ટિકલમાં આપણે યાદ કરવાનું છે। આપણે યાદ કરીશું તો સામેવાળા સુધી યાદ પહોંચશે। બાકી આપણે નહીં કરીએ ને એમને કંઈક તમે યાદ કરો તો પછી શું થશે? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़े जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। આજે એ સ્થિતિ થતી હોય છે ને એટલે બાબા કહે છે કહેવાવાળા રહી જશે, કરવાવાળા આગળ નીકળી જશે। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा बांधेलियोનું ઉદાહરણ આપે છે કે પુરુષાર્થ કરવાવાળા ઊંચ આગળ વધી જશે, મેસેજ આપવાવાળા રહી જશે। તો એવી રીતે બાબા બાંધેલી માતાઓનું ઉદાહરણ આપે છે કે બાંધેલી માતાઓએ બાબાને નથી જોયા છતાંય પત્ર લખે છે, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में लेते हैं। पहला શું આવે છે? ફૂલ અને જે 2 દાણા હોય છે મેરુ મણકો એ હાથમાં આવે। उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला
तुम्हारा यादगार है। આપણે ભારતને સ્વર્ગ બનાવવાની સેવા કરી રહ્યા છે, તો આ જે માળા છે એ આપણું જ યાદગાર છે। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होंगी। बाबाए यज्ञની રચના કરી છે કે જેમાં સમગ્ર પુરાની દુનિયા, કળિયુગી दुनिया स्वाहा થઈ જશે। बाप है मोस्ट बिलव्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। बाबा बिलव्ड फादर છે કે જે ભવિષ્ય માટે સદા સુખનો વારસો આપી રહ્યા છે 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लेन अनुसार। અને આ વારસો મેળવવા જેને 5000 વર્ષ પહેલાં વારસો મેળવ્યો છે એ જરૂરથી આવશે। तो बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। बाबा શું કહે છે? સુખધામ સત્યુગી દુનિયામાં જવું છે તો પહેલા પવિત્ર બનો। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो वा मदद करो, नहीं। बाबा કહે છે માંગવાનું કંઈ નહીં કે कृपा करो, मदद करो, आशीर्वाद करो। हम तो सबको मदद करते हैं। આપણે બધાને મદદ કરવાની છે, કોઈ મદદ માંગવાની નથી। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाबा કહે છે તમે યાદ કરો તો યાદ કરવાનું તમારું કામ છે અને ડાયરેક્શન જે બાબા આપે છે કે કઈ રીતે પુરુષાર્થ કરો, કઈ રીતે આગળ વધો, કઈ રીતે તમારી ઉન્નતિ કરો, તો એ ડાયરેક્શન જ બાબાની કૃપા છે। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। कुछ भी करो, खाना कैसा है? भल बाहर जाओ, खाना पवित्र भोजन खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी ही होगा। डूंगरी लसन हसे सतयुग में तो बाबा कहते छे डूंगरी लसन नहीं खावानू, यह सब यहाँ छोड़ना है। यह चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है। सतयुगમાં કોઈ બીમારી નથી હોતી અને અત્યારે જોઈએ તો કેટલી બીમારીઓ છે। वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती ही नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। કારણ કે સતયુગમાં તો હરેક વસ્તુ સતો પ્રધાન છે, તો ભોજન સતો પ્રધાન હોય તો બીમારીઓ ક્યાંથી થવાની? અત્યારે તો ખોરાક જ તમો પ્રધાન બની ગયા છે, તો એક એક બીમારીઓ નીકળતી જાય છે। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा શું કહે છે? મને યાદ કરો और संग तोड़ी एक मारी साथे संग जोड़ो तो पावन बनी जसो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पास्ट इज पास्ट, मैंने जो भूतकाल में थवानो तो थई गयो, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे छे जे थवानो हतो ए थई गयो, हवे ए वातोने भूली आगळ गृहस्थ व्यवहार में रहीने सतो प्रधान बनवानो पुरुषार्थ करो। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। ભારતને સ્વર્ગ બનાવવાની સાચી સાચી સેવામાં તત્પર રહેવાનું છે। ખાન પાન बहुत शुद्ध रखना है,
पवित्र भोजन ही खाना है, કારણ કે ખાન પાન બી કેવું હોવું જોઈએ? શુદ્ધ પવિત્ર. वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवादारी भव. रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं. गुलाब होय तो गुलाबनी खुशबू दूर दूर सुधी फैलाती होय, तो बाबा કહે છે તમે શું છો? रूहानी गुलाब. तो तुम्हारी खुशबू भी दूर दूर फैलवी જોઈએ. उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है. वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते. જે રૂહે ગુલાબ હોય એની દૃષ્ટિમાં સદૈવ શું હોય છે? સુપ્રીમ રૂહ માના પરમાત્મા સમાયેલા હોય. બીજું પરમાત્માને જેને બી જુએ એમાં આત્માને જોશે, આત્મા સાથે વાત કરશે. मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ. मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है. ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं. यही है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता. रूहानी सेवादारीनी नंबर 1 विशेषता कई है कि जे अनुभव करशे कि परमात्मा जे हजूर छे ए सदा हाजिर छे, करण करावनहार मारा द्वारा करावी रह्या छे, हूँ परमात्मानी छत्रछायामां चाली रही छूं, तो आ अनुभव करवावाळाने ज रूहानी सेवादारी कहेवाय छे. स्लोगन, निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना. निर्विघ्न बनीने सेवाना कार्यमां आगळ नंबर लेवो, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनवो. अच्छा, ओम शांति.